Good morning, friends. Exercise 7.1 complete हो गए. Now today discuss the section formula. What is the section formula? कि line segment AB. So line segment AB point P is an internal. So now point P, a line segment AB is divided from AB. AB internal divide from AP divided by PB, right? P point on the line segment AB. And now another figure is a line segment A, B and point P. And point P is outside the line segment AB. So now what is the ratio? Okay, AP divided by PB. Clear? Point P. Now what is the section market? Now A x1 y1 x1 y1 p xy and b x2 y2. The 2 point and pxy is point on the line segment joining them a and b, so such that ap upon pb, ap means m1 and pb means m2. Okay, ap upon pb means ap means m1 and pb means m2. The point p is said point P is said to be divides line segment AB's internally in the ratio m1 upon m2. So now Pxy equal to formula is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma is this are x coordinate. Now m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. In this formula is a section formula. Is it clear? Is a section formula. Is it clear? Okay, pxy is x coordinate. Now second is the y coordinate. Okay, m1 x2 सबसे इंपॉर्टेंट है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. 1 2 है 1 2 2 1 1 2 1 मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा. क्लियर हो गया? व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. इज इट क्लियर? कि सपोज रेशियो कि नाउ line segment AB, A, B, point P. Now ratio APK and PB is 1. So what is the formula of section formula? कि AP upon PB equal to M1 upon M2 equal to K by 1, right? K by 1. तो section formula PXY के pxy equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Is it clear? The 1 2 2 1 1 2 2 1 m1 m2. Okay, now m1 is k, m1 is k like kx2 plus m2 is 1, like 1 into x1 is x1 upon m1 is k. Now m2 is 1, the k plus 1 comma k m1 k y2 plus m2 is 1 y1 upon k plus 1. K ratio 1. So what is the formula of section formula? kx2 plus x1 upon k plus 1, ky2 plus y1 upon k plus 1. Is it clear? Now m1 line segment AB and point P, ratio is 1 and 1. So what is the formula of section formula? 1 1. Both are 1 1. So now AP upon PB equal to m1 upon m2 equal to 1 by 1, right? So pxy equal to
Okay, now section formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, right? m1 is 1, so equal to in bracket 1 x2 plus m2 1 x1 upon 1 plus 1 comma m1 is a 1 y2 plus m2 1 now y1 upon 1 plus 1. Is it clear? So now x2 plus x1 upon 1 plus 1 2 y2 plus y1 upon 2. So now pxy clear? x1 x2 plus x1 divided by 2 and y2 plus y1 divided by 2. So what is this formula is the midpoint of line segment AB. midpoint of याद रखना midpoint of line segment. जैसे मान लो midpoint है A and B and P is a midpoint. P is a midpoint of line segment AB. So what is the formula? x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. Is it clear? हो गया क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए सारे डाउट. सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है. अब नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. The 7.2 question number 1. Exercise 7.2 question number 1. Okay, find the coordinates of the point which divides the line segment joining of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. Right? Find the coordinates of point which divides the line segment. Okay, now A, B, point P, A -1 7, B 4 -3, P XY, and AP ratio 2 and PB 3. Clear? Suppose the point P XY is internally divides by, suppose the point P XY internally divides the AP upon PB equal to M1 upon M2 equal to 2/3. Internally divides line segment AB, AP upon PB equal to AB by 2 equal to 2/3. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PXY फाइंड करना है. क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट PXY. PXY इक्वल टू M1 x2 plus M2 x1, M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2.
comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, राइट। देखो हमारे पास x1 y1 है, x1 y1 x2 y2 इक्वल टू इन ब्रैकेट m1 ले 2 x2 ले 4 प्लस m2 ले 3 x1 माइनस 1 m1 ले 2 प्लस 3 m1 ले 2 y2 ले माइनस 3 प्लस m2 3 y1 7 upon 2 plus 3 4 to the 8 plus minus 3 divided by 5 comma 3 to the minus 6 plus 21 divided by 5, right। अब नाउ 8 minus 3 पी एक्स इक्वल टू 8 minus 3 5 divided by 5 15 divided by 5 5 cut 5 3 जा। नाउ पी एक्स वाई इक्वल टू 1 and 3 क्लियर। 1 and 3 हो गया क्लियर। हो गया 8 minus 3 5 divided by 5 એટલે 1 એટલે कौन सा पॉइंट आएगा पी एक्स वाई ए व्हाट इज द आंसर बेटा कि पी एक्स वाई क्लियर। फर्स्ट नंबर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। कौन सा पॉइंट पे आएगा पी एक्स वाई इज अ 1 3 पॉइंट। क्लियर 1 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट नंबर कि नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3। ट्राइसेक्शन means 3 part line segment first one is A and line segment B। now point P and point Q trisection, right। कि A is a minus 2 minus 3 sorry A is a 4 and minus 1 and B is a minus 2 and minus 3। AP is a suppose K and K। Okay, now line segment AB which point P and Q ट्राइसेक्शन हमको फाइंड करना है। कि when P divides yes let P and Q be the points of trisection
ट्राई सेक्शन पॉइंट, राइट। तो देयर पर क्या होगा कि ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू के। फर्स्ट, when P divides AB in the ratio, P divides AB in the ratio like AP upon PB, AP upon PB equal to M1 upon M2 equal to K upon PB like K plus K2K equal to 1 by 2, 1 by 2, right? तो फाइंड क्या P गुड नाउ PXY equal to M1 X2 plus M2 X1 M1 plus M2 comma M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2, right? अब A for -1, A for -1 है and B -2 -3, A x1 y1 equal to A for -1, B x2 y2 equal to B -2 and now -3, like Pxy M1 upon M2 equal to 1 by 2 equal to in bracket M1 એટલે 1 M1 x2 -2 plus 1 -2 plus M2 2 M1 x2 M2 x1 4 divided by 1 plus 2 comma M1 1 y2 -3 plus 2 in bracket M1 y2 plus M1 y2 plus M2 y1 -1 divided by 1 plus 2 equal to 2, 1 into -2 plus 4 to 8, 1 plus 2 3, -3 plus -2 divided by 3 equal to 6 divided by 3 -5 by 3, 3 to 6, Pxy equal to 2 -5 by 3, राइट। P फाइंड हो गया कि 2 -5 by 3, 2 -5 by 3. अब P dash Q dash P. Q is the midpoint of line segment PQ. Now P dash Q dash B. के point Q is a midpoint of line segment PB. Line segment PB, right? तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला मिड ऑफ पी क्यू या Q इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, राइट, इक्वल टू मिड पॉइंट है ए पी ए क्यू एन बी P 2 -5 by 3. Q फाइंड करना है B है -2 -3 -2 and -3, right? Q is a midpoint of line segment PB. Line segment PB. तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला इक्वल टू x1 x1 y1 x2 y2, right, equal to Q xy equal to in bracket x1 2 -2 divided by 2
x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 प्लस y1 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 એટલે માઇનસ પાઈ બાય 3 -3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -2 એટલે 0 डिवाइड बाय 2 LCM -5 -9 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 0 डिवाइड बाय 2 એટલે 0 -5 -9 -14 डिवाइड्स 3 2 जा 6 3 2 जा 6 अब 7 2 जा और 3 2 जा इक्वल टू 0 एंड -7 डिवाइड बाय 3 तो क्यू एक्स वाई इक्वल टू प्रोडक्ट ट्राइसेक्शन ऑफ पॉइंट P 2 -π/3 एंड Q 0 -7/3 फाइनल आंसर हो गया क्लियर। देख लो स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क पे कर देना, ठीक है। ट्राइसेक्शन की फॉर्मूला दो